Welcome back, guys. अब हम करेंगे reflection and refraction of light. Question 9, paper 2, 5054. Let's start. Question 9. Light travels along optical fiber by total internal reflection. State two differences between total internal reflection and reflection in a mirror. अच्छा, reflection in a mirror will go something like this. A ray of light is मतलब travel करते करते hits a mirror and reflects back. The angle of incidence must be the equal to the angle of reflection. That is simple and easy reflection. While on the other hand, refraction जो है, अगर this is a rarer medium, this is a denser medium, on the boundary of the denser medium, light आगे hit करती है and if the angle of incidence is larger than the critical angle, it will hit back and go back into the denser medium. Only if, याद रखिए, only if the angle of incidence is greater than the critical angle. So that is the first point. Second point is like जो होती है total internal reflection की एक applications भी होती हैं कुछ. The main application being जो डेटा को ट्रांसमिट करती है हाई स्पीड पे, राइट. हाई स्पीड डेटा को ट्रांसमिट बाय लाइट ओवर सिग्नल्स और बाय सिग्नल्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस मतलब स्पीड इन लाइट इज ऑलमोस्ट 200,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड और दिस वुड बी अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. अगर आपने आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाना है कुछ सिग्नल्स, दैट वुड बी अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. ठीक है ना. और रिफ्लेक्शन इन अ मिरर का एप्लीकेशन क्या होती है. आप किस घर में को मिरर तो होगा, आप उसको उसके ऊपर आपकी इमेज रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में वापस आती है एंड यू कैन सी द रिफ्लेक्शन. देयरफॉर आपको पता चल जाता है व्हाट योर करंट स्टेट है, कैसी हालत है आपकी. अच्छा, आगे. रिफ्लेक्शन इन मिरर अकर्स एट एनी एंगल. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओनली अकर्स एट व्हेन I is equals to angle of incidence is equals to, I mean, greater than the critical angle. Critically, what they have told us is the critical angle is, अगर ये हम बना लें, the critical angle, देखो, ये है critical angle which is 44 और critical angle पे refracted ray is on the 90 degrees. So this will be the refracted ray and it is 90 degrees. तो उन्होंने हमें बोला है कि we have to find out what the refractive index is of the fiber. So आपने एक फॉर्मूला दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर इज क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला और वो निकालने का व्हाट डू यू कॉल इट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला बाय रिफ्रैक्शन. ठीक है ना. बाय रिफ्रैक्शन एंड बाय क्रिटिकल एंगल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकालना साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, एन इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर. और क्रिटिकल एंगल का इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी बीइंग साइन क्रिटिकल एंगल. अच्छा, इन दोनों में ये निकल ही आएगा लेकिन यूजुअली व्हाट दिस इज फॉर इज, यूजुअली इट इज नॉट यूज्ड, द क्रिटिकल एंगल इज नॉट यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट इन दिस क्वेश्चन इट इज. तो अब हम निकाल लेते हैं एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन सी. अच्छा, एन क्या है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड दैट आउट. साइन सी क्या हमारे पास इज साइन 44. दिस इज द क्रिटिकल एंगल. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, हाउ मच विल वी गेट, वी गेट 1.4. n is equals to 1.4. ठीक है ना. 1.4 will be the answer. वेरी सिंपल क्वेश्चन और 2 मार्क्स का. सो या आगे देख लेते हैं. Optical fibers are used in telecommunication to send large amount of data. So like I told you earlier, pulses of light travel at most the speed at almost the same speed along a fiber as the electrical pulses travel down along a metal wire. State two advantages of using optical fiber rather than wires for transmitting data. First of all, जो होते हैं ऑप्टिकल फाइबर, इट इज फास्टर. ठीक है ना. पहली बात, दिस अर्थ इज वेरी बिग एंड इन ऑर्डर टू सेंड फास्ट डेटा यू नीड टू सेंड इट विया स्पीड ऑफ लाइट. और अगर स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा दैट वुड बी अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड. ठीक है ना.
It would be a fraction of the second. Anyways, as I was saying, जो ज़्यादा amount of data transmit हो सकता है, if it is fast enough, तो a lot of data can be sent around. ये भी हो सकता है और उसके बाद it doesn't even like उसके लिए चाहिए क्या होता है? थोड़े से ट्रांस वो चाहिए होते हैं, बूस्टर चाहिए होते हैं, राइट? इट डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं चाहिए होती इसको ज्यादा. तो ये तो more more data per unit time, less decrease in strength amplitude attenuation, less heat power produced wasted, less need for repeating or amplification, less interference noise, more secure, less chance of crosstalk, light, less heavy. So अभी सारी याद कर लें. Not very important. It doesn't come in the questions very often. So that is it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.